वरना फिर उसको वो फंक्शन बना के छोड़ नहीं, देना था। कौन सा क्वेश्चन बोलो, कौन सा क्वेश्चन? बहुत सारे मैम, कितने क्वेश्चन में तो फंक्शन ही बनाने थे सिर्फ। हाँ, तो वो फंक्शन सिर्फ फंक्शन की कोडिंग होती है, चाहो तो एक लास्ट में जाके एक ऐसे करके कॉल भी कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैम एक मैम इतना सही कुछ भी कोड लिखा लिखने है का ना मैम, मैंने नंबर। स्टैक्स का, आपको मजा आ जाएंगे पढ़ के। हाँ मैम, ये इम्पोर्टेंट है मैम, पता है इसने जो पूछा, मैम कुछ भी लिखने के कुछ नंबर कुछ मिलेंगे। भी लिखा है मैम, तो नंबर थोड़े बहुत दे देना देखो, बस। मतलब देखो उसके मेरी अंदर बात अपन सुनो। ने पैसे इंपोर्ट मिलेंगे, मैं वगैरह देखो, खुद से आ करवाया है जाएगा, तो देखो, अच्छा आधा नहीं आधा। बोल रहे। मैम एक और मैम, हाँ, पहले आमिर मैम वो बोलेगा जो फिर उसका आंसर दूंगी। हाँ। मैम जो अपन ने स्टैक बनाई थी, मतलब स्टैक के लिए प्रोग्राम लिखा था पुश पॉप का, उसमें तो हाँ, फिर जब भी अपन नया स्टैक डाल रहे थे उसमें अपन को बताना था कि मतलब जो टॉप पे वो वाला एलिमेंट कौन सा है। नहीं 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 और नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। और मतलब उसकी बताना तो नहीं था ना, जैसे बढ़ रहा है उसकी तरफ टॉप चलता जाएगा, सिर्फ सीधा ये ना, सिर्फ अपेंड करना और वो करना है, पॉप हाँ, करना है अपेंड करना और टॉप, जब और एलिमेंट पॉप बढ़ेगा, करना इफ, है। हाँ, इफ एलिमेंट इंसर्ट होगा तो टॉप +1 हो जाएगा बस। वो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो हमको नहीं बताना, वो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। है ना, वो इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, ठीक है। क्या, अब मेरी बात सुनो, देखो, मेन होता है इसमें कंप्यूटर में कि तुम लोगों का लॉजिक क्या है। ठीक है, कोडिंग क्या लिख रहे हो, चाहे वो तुम 2 लाइन में लिख लो, 3 लाइन में लिख लो, तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए। वही तो मैम, आपका 2 नंबर का वो जो दिया था पाइपलॉट वाला, वो आधी हम्म लाइन में तो खत्म ही हो गया, वो कुछ होने था ही दो नहीं ना, उसके अंदर। उसमें होने दो। जरूरी तो है ना 4 मार्क्स का तो तुम 10 लाइन लिखोगे? 2 लाइन में यदि तुम्हारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तुम आके रन कर लो, वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो ठीक है, सही है, वो गलती नहीं है। तुम लोग देखना यस सैंपल मैम, पेपर, एक और जो मैम वो सैंपल था ना, वो सैंपल नंबर को रिवर्स करने वाला, हाँ उसमें मैंने पहले ये करा था कि पहले उसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया, उसका हाँ मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक फंक्शन रहता है ना वो लिस्ट को रिवर्स करने वाला, वो यूज कर हाँ, लिया, फिर उसको मैंने टाइप कास्टिंग से ना उसको इंटीजर में वो कर दिया चेंज। सही है ठीक है, वो। बिल्कुल ठीक है। यदि उसमें बोला नहीं है कि इनबिल्ट फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, तो आप कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज करके भी आप कर सकते हो। तुम लोगों को पता है फैक्टोरियल का भी एक फंक्शन होता है, फैक्टोरियल के नाम हाँ से। होता है ना, मैथ्स में हाँ, है। मैथ्स में वो यूज कर लो, जरूरी है ना तुम फैक्टर वो करके वो पूरा कोडिंग लिख के करो। तुम लोग ध्यान से देखना, उसकी जो सैंपल पेपर्स है उसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि कोडिंग कुछ भी चलेगी, मतलब मार्किंग स्कीम में लिखा है शायद, या उसमें लिखा मतलब है। जो रिजल्ट आना चाहिए वो सही होना चाहिए। हाँ, मतलब लॉजिक सही होना चाहिए। और जैसे अब इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखो कि फॉर इधर ही लिखो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, जैसे हम C++ में क्या करते थे, सेमीकोलन का कहते थे, भाई सेमीकोलन का जरूर ध्यान रखो, उसके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि वो जो चेकर होता है वो देख लेता है सेमीकोलन। और यदि अच्छे मार्क्स चाहिए ना, कि आप चाहते हो कि मैंने जो कोडिंग लिखी है वो प्रोग्रामर को समझ में आ जाए, तो स्लैश करके कमेंट में भी लिख लिया करो कि ये कोड ये वर्क कर रहा है, ये कोड ये वर्क कर रहा है। मैम अप्रैल के महीने में हम पूरे सिर्फ कोडिंग कोडिंग करेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं मैम। अरे कहाँ भाई पे? मैम, मैं हाइलाइटर तक लाया था अप्रैल मैम, में। अप्रैल में पेपर के बिल्कुल। लिए। तुम लोग बिल्कुल अप्रैल के मंथ में, ये मार्च में भी करेंगे यार, अप्रैल में क्यों, मार्च भी हमारे पास तो। इसमें बहुत चलेगा ना प्रैक्टिकल, इसलिए हो नहीं पाएगा ना इतना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मार्च में भी प्रैक्टिकल कर लेंगे, अप्रैल में भी पूरा फिर से कर लेंगे, और हमारे पास 10 दिन का गैप है, उस 10 दिन में छुट्टी मत करना कोई भी। 1-2 घंटे आ जाना स्कूल पढ़ ले, लास्ट के 2 दिन दे मैम दूंगी मैं मैथ्स तुम लोगों को। पढ़ेंगे मैम, पागल हो क्या, कंप्यूटर थोड़ी मैथ्स पढ़, पढ़ेंगे। पागल हो क्या, मैथ्स पढ़ेंगे? मैथ्स तो कर लोगे तुम लोग। मैथ्स एक दिन बाद है, 1 या 2 दिन बाद बस। पागल हो क्या, मेरे कंप्यूटर में 10 दिन का गैप मिला, कोई मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, या स्कूल अरे में आके मैम एक सुनो या महीने में तो, मैम टॉप कर जाएंगे पक्के से, जरूरत नहीं पड़ेगी फिर पढ़ने की। सुनो मेरी बात, तुम लोग क्या करना, 10 दिन ना 2 घंटे स्कूल में आके पढ़ लेना, शाम को जाके मैथ्स पढ़ लिया करना, ठीक है। और लास्ट के 2 दिन में तुम लोगों को दे दूंगी खुद सेल्फ स्टडी के, 8 दिन पढ़ लेना, एक हफ्ता पढ़ लेना, चलो बस। ओके आमिर? ओके मैम। चलो। अच्छा, किसी को डिस्कस करना है कोई पेपर? सारे आगे, मैं अटेंडेंस ले मैम लेती वो हूँ। बताना था कि मैम वो थोड़ा भी लिखे तो नंबर दे देना, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा यदि लॉज, हाँ, हाँ, जैसे मैम, तो जैसे मैम हमने उसमें करवा अच्छे दिया आ जाएंगे। इंपोर्ट पांडास, तो उसके दो तो नंबर उसका बाकी होते हैं कोड का नंबर, आधा उसके नंबर। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो, जिस जिसके मैम जो वो जो मैम वो जो इंडेंटेशन है ना, मैं उसमें थोड़ी वो हो गई थी मैम, आगे पीछे उसको काट पीट के थोड़ा आगे लिया ना, तो फिर उसको वापस से आगे ले लिया, फिर जो नई लाइन है ना उसको वापस से एकदम पीछे ले लिया, तो मैम वो इंडेंटेशन मिल ले रही है, उसको इग्नोर कर देना थोड़ा। हाँ मैम, मतलब वो क्या हुआ नहीं ना नहीं, कि अगली इंडेंटेशन लाइन नहीं में करो। कट हो अरे गया। मैम वो सिर्फ अरे काटने अरे की अरे वजह से अरे हुआ अरे अरे मैम, अरे, बाकी हमें भी तो पता है कैसे होता है, वरना वही फिर तो वो मैम, अब नई हमने लाइन पे आना पहली पड़ता। पहली शिरीष क्या लाइन सही बोले? लिख दी हमने, सेकंड हाँ लाइन गलत हो गई, अब सेकंड लाइन थोड़ी सी काट दी, स्टार्टिंग में पता चल गया, तो उसके बाद नहीं वहीं से कंटिन्यू कर ली, तो फिर वो ना थोड़ा आगे खिसक गई हाँ इंडेंटेशन। वही, और जब ठीक है। नीचे से करे तो थोड़ी पीछे आ गई। ठीक है, फनिंद्र के कितने मार्क्स आने वाले हैं? प्रियांशु नहीं आया, प्रियांशु तो मुझे लग रहा है बहुत पसीना पसीना हो रहा था पेपर देख के।
हमने फनिंद्र तो कितने 11th में ही बोली थी नहीं मत ले सीएस। नहीं पढ़ लेगा वो। फनिंद्र कितने मार्क्स आने वाले? फनिन के पूरे मार्क्स आ रहे हैं, बस 3 घटा दो। कितना रहे? 67। उसने बोलता कि बस मेरे को एक नहीं आया, बाकी सब आ गए। चलो फनिंद्र के मैंने 67 लिख दिए। राकेश अपने मार्क्स लिखे कितने आने वाले? चलो राकेश चैट बॉक्स में लिख लेगा। राकेश ठीक चिल है कर रहा है। यार, ओ 35 नहीं भाई यार, नहीं ना बाबा, इतना नहीं, उल्टा कर दूं 53। राकेश फुल लाएगा, अभी लास्ट टाइम भी वो फुल लाया था, एक कौन सा असेसमेंट हुआ था 55। चलो ये फनिंद्र के 55 अच्छा फिर मैम ऐसे में मेरे भी टॉपर एडिट लोग हैं कर लेना मैम। मैम। है। ऐसे हम मेरे भी एडिट कर लेना मैम, मेरे 20 कर दो फिर। नहीं हमने लिख दिया। अब चलो क्या करना है आज, आमिर बताएगा। आमिर क्या करना है, जल्दी बोलो, टाइम पास नहीं करना, फटाफट बोलो। मैम आज यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब हाँ चलाएंगे। आराम से मस्त। क्या पढ़ोगे? सी रुको। प्लस पढ़ने प्लस। थोड़ी है, मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखते हैं। अरे नहीं यार, वैसे भी उसके कितने सारे व्यूज है, आप कितने बढ़ाने तेरे को। चलो कौन सा हाँ ये भी टॉपिक सही है, पढ़ना तो है, किसी मैं जल्दी ऐसे सी के बोलो। प्लस देखते प्लस जिसके। सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस नहीं, पांडास का देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हम डेटा स्ट्रक्चर करते हैं ना, क्यू वाले। यार अपन को क्यों नहीं है, स्टैक है। मैम है मैम, एक बार देखना आप। नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, वही तो मैं क्यों नहीं है अपन को। एक बार सर्च करके देख लो वाले हाँ चाहे। मेरे पास है, ऐसे रुको ही मेरे को मैंने, लग रहा था। हाँ देख लो एक बार। क्योंकि मुझे याद है मैं एग्जाम में क्यों देने वाली थी, फिर मेरे कहा क्यों नहीं है, मैंने चेक किया था, ये क्यों नहीं है, अपन को स्टैक है। रुको, कंप्यूटर साइंस, रिवाइज्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस, स्टैक होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा है क्यों नहीं है। वो ये स्टैक का जो मैंने एक प्रोग्राम दिया था ना, ऐड डिलीट वाला, ये हमेशा आता है 3 से 4 मार्क्स का। उसकी सेम कोडिंग होती है, वही का वही कोडिंग रट के उसको लिख देना सेम एज इट इज, पूरा अच्छे से सब एक्सप्लेन करवा कर देना उसको। ठीक है, देखो स्टैक है, पुश पॉप यूजिंग अ लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट एज कवर्ड इन 11th स्टैक के। आमिर दिख रहा है क्या? आमिर लेकिन मैंने जिसमें देखा था उसमें तो क्यू भी बता रहा था। वो रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं है, जो रिवाइज्ड हुआ ना सिलेबस उसमें नहीं है, पुराने वाले सिलेबस देखा होगा। रिवाइज्ड, 2021 ही। हाँ यही है 2021 सिलेबस, यही है रिवाइज्ड सिलेबस, यही है सिलेबस। न्यू वाली जिसके पास बुक है ना उसमें भी देखना यही है। अरे मैम एक बार क्रोम पे सर्च करो, उस पर डालो, और उस पे जो पहले लिंक आएगी ना पीडीएफ की, वो खोल के देखना, उसमें मिलेगी। अरे वो पुरानी होगी, मुझे पता ही, मैंने कौन सी, बहुत बार। वो जागरण जोश वाली? अरे हाँ नहीं नहीं, वो सीबीएसई की वेबसाइट पर है। cbseacademic.nic.in। सीधा पीडीएफ की लिंक है उस पे। क्या डालूं उसमें, बोलो। सीबीएसई सिलेबस, मैम वो क्लास 12 सीएस सिलेबस 2020-21। सिलेबस, सीधा डाल दो ना, क्लास 12 अच्छा सिलेबस सीएस। अच्छा ऐसा डाल दूं क्या, क्लास 12th सीएस सिलेबस सी 2021। एस, क्या आ गया सिलेबस ये आ 2020, गया 3rd नंबर पे। ये। हाँ हाँ, अब हाँ देखो। देख लेते हैं, रिवाइज नहीं है ये। रिवाइज नहीं है। हाँ मैम, इसमें दिया है हाँ मैंने। नहीं ये रिवाइज नहीं है, क्योंकि ये आइडिया ऑफ एफिशिएंसी परफॉर्म, रिवाइज नहीं है ना? रिवाइज नहीं। अरे मैम देखो मैम, सबसे ऊपर चले जाओ, उसके टाइटल में लिखा रहता है रिवाइज है कि नहीं है। हाँ ये रिवाइज नहीं है, रिवाइज्ड वाले में क्या था, ये था रिकर्शन हटाया था इन्होंने, ये हटाया था, आइडिया ऑफ एफिशिएंसी ये हटाई थी। फिर वो हटा दे टॉपिक जो कॉलेज में जाके पढ़ने थे। और क्या, ये अच्छे वाले को टॉपिक थे। ये आइडिया ऑफ एफिशिएंसी वाला तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें एल्गोरिदम कुछ था ना मैम, ये वाला बहुत सही इजी था था, ये इसमें वाला। कुछ भी नहीं था। हाँ ये नेक्स्ट ईयर आएगा, तुम बस पढ़ा ये। दे दो ना मैम, एक नहीं महीने में। पढ़ा देंगे, चलो अभी बहुत टाइम है। और इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं हटा था। ये वाले प्रोग्राम बोला था मैंने तुम लोगों को करने को, फिबोनिक सीरीज और ये और वो। चलो मैं बुक में से बता दूंगी, बुक में से टीप लेना, ठीक है। चलो अभी क्या देखें अपन,
पांडास देखे, पांडास पांडास पाइथन ट्यूटोरियल। ये कोड विद हैरी वाली देखें, इसका देखना अब वो है, 1 घंटे की है। थोड़े से देर देख लेते हैं। व्हाट इज अब वो शुरू से बताएगा, पाइथन भी इंस्टॉल करवाएगा, फिर वो कोड एडिटर भी इंस्टॉल करवाएगा, उसके बाद बताएगा ये क्या होता है पांडास, फिर पाइथन के इंट्रोडक्शन करवाएगा, उसके बाद शुरू करवाएगा। रहने दो, कहना इतना नहीं हमें करना। ज्यादा छोटा नहीं हो गया अबे? क्या ये बंदा? अरे वीडियो। नहीं, रुको रुको, 1 सेकंड रुको, 1 मिनट, 6 मिनट की। 1 मिनट। अरे मैम वो अपनी कक्षा डाल रही है आईपी का सिलेबस भी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसमें आ कैसे? डाल रहा है जाएगा। क्या वो भी? हाँ, आईपी का सिलेबस आएगा ना, डिस्कॉर्ड पे आ गया मैसेज, अच्छा, मैं देखा ही नहीं था इसको। किसका देखना आईपी? आएगा। कौन से आईपी का सिलेबस? कहाँ? अरे मैम वो अपनी कक्षा चैनल है ना, उसने सीएस का पूरा सिलेबस डाल दिया क्लास 12th का। तो अब पढ़ा कौन रहा है सीएसआईपी? वो तो भाग गया। देख, नहीं नहीं वो तो भाग्य, लेकिन वो उसने नए बंदे इकट्ठे करे थे ना, पूरी टीम 40 के हो गई, उसमें से एक सीएस पढ़ा रहा है, उसके मतलब वो डेटाबेस तक पहुंच गया। यही है क्या कक्षा? अपनी कक्षा? अरे मैम पांडास थोड़ी करा है उसने, अभी आईपी शुरू शुरू होगी, अभी हुई नहीं। अच्छा, पांडास नहीं किया उसने। हाँ मतलब अभी आईपी शुरू नहीं हुई, अभी होगी। अरे फनन, पहले वाले पर अटैक कर देना यार। चलो बातें नहीं, अब जल्दी से वीडियो देखो। एक मिनट ना। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, सॉरी फनी आ रही है आवाज तेरी। हाँ फनींद्र, आ रही है आवाज। मैम, इतनी देर से खराब हो रहा था मैम, अभी ठीक हो गया। हो गया, चलो। तो मोबाइल से चला रहे हो, कैसे चला रहे हो? लैपटॉप से। हाँ, नहीं तो मोबाइल तो नया लिया है अभी अभी, नया बताओ खराब लैपटॉप हो ले लिया जाता। क्या इसने? पता नहीं। क्यों अरे फनी? तुम लोग सीएस चलो की आमिर, क्लास है। आमिर ये पांडा का कौन सी अच्छी वीडियो है, जल्दी बता। को पता है मैंने कोई नहीं किस? देखा उसने अभी। थोड़ी ना देखी होगी पांडा हाँ में मैम, अभी। एड्यूरेका देख लो मैम, ये चैनल को मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। किसका? मैम बैक करो, बैक हाँ बैक, चल अरे बैक। यहाँ से नहीं, यहाँ से बैक करो, वो बैक वाले जाना है। हाँ हम्म। ये हटाओ, सर्च बार का हटाओ हटाओ हटाओ, इससे यहाँ हाँ से, हाँ ये दिख रहा है एड्यूरेका, सेकंड वाले। हाँ, आ रहा है अभी ये। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। अब ठीक है? अब these with examples, and then we will see how we explore the data using pandas. सुनाई दे रहा है? Moving further, we will learn pandas operations, merging, grouping, reshaping, etc. And then I will discuss time series and category. After this, I will talk about plotting with pandas, and finally, to sum up this session, I will tell you about reading and writing files using pandas. I hope you are clear with the agenda. Also, don't forget to अरे subscribe किसी काम का नहीं है पांडा है। and press the bell icon to get the latest updates on Edureka. And enroll to Edureka's बहुत Python. छोटा सा है पांडा। The link is given in the description box below. So let's go ahead and take a look at what exactly is Pandas. So Pandas is a Python library which is used for data manipulation, analysis, and cleaning. And Python Pandas is well suited for different kinds of data, such as we can work on tabular data with heterogeneously typed columns. We can work on ordered and unordered time series data, arbitrary matrix data with rows and column labels. We can work on unlabeled data, and we can also work on any other form of observational or statistical data sets. Now I'm going to tell you how you can install pandas on your systems, guys. It's very easy to install Python pandas. You just go to your command line or terminal,
and just type pip install pandas, or if you're working on an IDE such as PyCharm, you can just simply type in pip install pandas in your terminal over there, or you can just open the project interpreter and add the library over there. Since we're going to work on Jupyter Notebook, I'm going to tell you how you can install Python pandas on Anaconda. So you just have to do one thing. So I'll just show you guys how you install Python pandas on your system. You open the Anaconda prompt. We'll wait for the prompt to set up. So you type conda install. It's already there in my system because I've already installed pandas since I've already worked on various data analysis projects, and it's a very integral part of it. Because to work on a data set, to read a data set, you require pandas, and it's just that you cannot work without pandas if you are working with any data related project. So this is how important Python pandas actually is. I'm going to tell you a few applications of pandas as well. So first of all, you can just say that Python pandas is an integral part of data, whichever project you're working on. So you can work on economics, you can use Python pandas for stock prediction, you can use it for recommendation systems, then you can use it on neuroscience and statistics also you can use it for, and then there is advertising, so many data coming from different platforms. You can just analyze the data using pandas, clean the data for irrelevant, inconsistencies in your data. You can do that using pandas, and then you can use it for analytics as well. That's the very basic use of Python pandas that I can think of. So right now that we know how pandas actually is in Python programming and what it is used for, let's go ahead and take a look at the very integral part of pandas, that is data frames and series. We'll wait for this to install, guys. Meanwhile, I'll just tell you what are data frames and series, guys. So data frame is a two-dimensional, and the size of the data frame is mutable, potentially heterogeneous data, or we can call it heterogeneous tabular data. So the data structure, which is data frame, also contain labeled axes, which is rows and columns, and arithmetic operations align on both rows and column labels. It can be thought as a dictionary-like container for series objects. Now, what exactly is a series, guys? So a series or a pandas series is a one-dimensional labeled array capable of holding data of any type, which is integer, can be string, float, Python objects, etc. And the axis labels are collectively called index, and pandas series is nothing but a column in an Excel sheet. So let's just take a look at a few examples, and then you'll be able to understand this better, what I'm talking about, like pandas and series, what exactly they are. We'll be working on an example now. So I'll just take it to Jupyter Notebook, guys. So we have already created a Jupyter Notebook. If you are not familiar with Jupyter Notebook, guys, we have a full tutorial on how to use Jupyter Notebook, all the cheat sheet and everything. So you can just refer to those in our Edureka YouTube channel. And make sure you subscribe to Edureka for more exciting tutorials, because we have a lot of content on Python, guys. So if you want to learn Python inside out, or any other technology for that matter, we have a lot of content on YouTube you can refer. Also, if you are at it, be sure to check out our courses on edureka.co, and we have a full Python programming certification program that you should also check out. So since I have already installed Python pandas, I'm just going to import pandas as PD. Run this. I'm not going to face any problem running this command because I've already installed pandas. Okay. So what this command will do over here, it's going to install the package, the latest release of pandas for me. I think that's why it's not running. Okay, we have our first statement over here, and we have successfully imported pandas as PD. So I'm using the alias as PD. I hope you guys know what alias is. So let's just say I'm importing this library. So alias is going to be this one, that is PD. So for importing, I'll tell you why I'm using this. Now if I want to create a data frame, I'll just use df as my variable name for data frame. So I'm going to use the alias when I type tab over here. Okay, so this is how I can use my alias to create a data frame. So this is just to tell you how you use an alias. Now I'm going to show you how you can create a series and a data frame. So first I'm going to, I'll have to import numpy as well, because I'm going to use it to create a null value, right? So df is equal to, I'm going to make a series, so I'll just write it as s. All right, series, and I'm going to pass a list of values. Let's say 1, 2, 3, 4, 5,
6, and I'm going to use my numpy now to create a null value, 8, 9, and one more value, let's say 10. So it's going to create a series. Now when I print s, so we have a series which has indexes which are already there, and all these values that I pass inside a list. So this is how we create a series in Python, guys, using pandas. After this, I'm going to tell you how you create a data frame. So for that also, I'm going to tell you how you create a data frame using a dictionary object, and how you can create a data frame using series as well. So now what we are going to do is we are going to create a data frame by passing a numpy array with a datetime index and label columns. So I'll take one variable, let's say date or dates. I'll just type it as D, and I'm going to take bd dot. So we're going to take the date range. After this, I'm going to pass a few values, let's say 2020, and I'm going to pass values like we're in the month of March, so I'll just write it as March. And after this, I'm going to take periods, which is equal to, let's say 10. So this is my date range, guys. Okay, I have an invalid syntax, right? Should work fine now. So when I print D over here, so I have all these values in a date range format. After this, what I'm going to do is I am going to take one data frame, which I am going to take as df for obvious reasons to make it clearer. And I'm going to take data frame, and inside this I'm going to pass a few values. So first of all, I'm going to take a few random values. So I'm going to use np.random number, and inside this I'm going to pass 10, let's say 4. Now I'm going to get the index values as p, and I'm going to have to pass a few more values, which is columns. So I'll pass the columns as a list. I'm going to take, let's say 4 columns. So I'm just going to take, okay, wait a minute, A, B, C, D. All right, do we have any errors? No. So now I'm going to print my data frame. So I have a data frame, guys, which I've created using, passing a numpy array, and I have a datetime index with labeled columns, which are A, B, C, and D. This is my index, guys. And I have all these random values using np array. So this is how you create a data frame, guys. Just a simple example. Now I'm going to show you how you can create a data frame by passing a dictionary of objects that can be, converted into a series also. So I'll take, let's say again, df is equal to bd dot data frame, and I'm going to pass a dictionary over here now. So I'm going to take a few values first of all. So first value is, let's say a. After that, I have to pass something, right? Okay, I'm gonna write, let's say, a list of 1, 2, 3, and 4. After this, my next value is gonna be, let's say, b, and I'm going to pass a timestamp, let's say. And for timestamp, I'm gonna use same I have used over here, 2020 0301. I've used the right, and after this I'm going to pass one more value, let's say C, and I'm going to use a series now, a series object, and inside this I'm going to pass 1, and the index is going to be, let's say, range. Alright, index is equal to a list with a range of 4, because we have only 4 values over here. We don't want any null values. And after this, I have to type in the data type as well, the data type of the series, guys. So for that, I use dtype is equal to, let's say, float 32. All right. After this, I provide my next value, which is d. Now for d, I'm going to use an numpy array. And for this, I'm going to pass a value, let's say, not 3, let's say 5 multiplied by 4. And let's take the d type is equal to integer 32. Yes. All right.
Now I take my final value, which is going to be E, and inside this I'm going to pass a data frame, or we're going to use the categorical object, guys. We're going to talk about this later on in the session, so don't worry. I'm just showing you how you can create a data frame using all these objects that we have at our disposal, guys. Instead of test and train, we can just call it as true or false. Doesn't matter. We are taking categorical object, so it has to be either true or false, or it can be 0 or 1, but it has to be decisive in a way that there are only two values. So I take another value, and for this, let's just say I give the value Edireka. Alright, so our dictionary is done over here. So we have created our data frame, guys. There's no error. Now when I print this, so we have our data frame, guys. So A, B, C, D, E, and F. So we have all these values using different data types, or we can call it objects as well. So for that also we can check the data frame, and we just write D types, and it's going to give us all the data types that we have. So we have date timestamps over here, integer, float, integer, category, and an object, because I have used a string over here. That's why it is giving us an object. But in the new release, that is Python 1.0.0, it's not going to be an object. It's going to show you it is a string. So don't worry, guys. And we have already made a video on Python Pandas 1.0.0 with all the features that have come with the new release, the new stable release released last month. You can check that out as well to check for the new features that we have come across. So now that we have done this, let us take a look at the next topic that we have, which is how to view data. So viewing data is basically, how you actually look at the data, or how you're going to look at the data using Pandas library. So we'll just jump right to Jupyter Notebook, guys, and I'll tell you what kind of functions or all those things you have at our bay that we can use to view our data. So we'll do one thing. First of all, we have data frames already that we have over here. So I'll do one thing. I'll just change it to df1 so that we have different data types, or I'm sorry, different data frames, guys. I'll run this, and this as well. Now when I check for df.d types, it should be different, guys, because we have already made a data frame using that. Alright, it's not. So I'll run all the So I'll do one thing. I'll restart and run all the cells so that we have two different data frames. So first of all, the first very basic thing that you can do for your data frame is to use, I'll just tell you guys, you write df.head. So what this function is going to do is give you the first 5 values inside your data frame, or the first 5 rows. And similarly, for the last rows, you can use the tail method. So this is how you get the first and last values inside your data frame. So it's going to display all the 5 values that you have at your beginning and the end of your data set. After this, we have df.index. So what this will do is it will give you all the values from your index. And similarly, we have df.columns, which is going to give you all the columns from your data frame. So this is how you view your data, guys. And then we have data frame.toNumpy, which is going to give you a NumPy representation of the data. So I'll just tell you how you can do that. So I'll just write df.toNumpy. Wait a second, guys. Yes. So I'm going to create a NumPy array using this. This I actually created a NumPy array. And for df, our data frame of all floating point values, data frame.toNumpy is actually fast and does not require copying the data. So it is a very best deal for we have. And then, okay, I'll just remove this. I don't want this. And then we have data frame.describe, which is going to give you somewhat like this, which is going to give you the count, the mean, the standard deviation, minimum, 25%, 50%, 70%, and maximum. So these are all values using the describe you can have, which is going to give you an idea or a perspective of how your data actually is and what kind of calculations are already there that you can think of. Then we have sorting by an axis. We can sort our data using an axis. So for that, you have to just write, I'll just show you guys. You just have to write df.sort by
index, and inside this you have to give the value of the axis. I'll just give 1, and then let's say ascending, you want it to be ascending. No, I just write it as false. So it has given me the data frame by sorting the index. Similarly, I can sort it by the columns as well, or I'm sorry, sort it by values. ओके, समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है, चलो इसको अपन और डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे क्या है ये। ठीक है, वेडनेसडे को, अच्छा वेडनेसडे को क्या करना है भाई, जल्दी बताओ मुझे क्या पढ़ना है, तो वही पढ़ेंगे। लैब लैब में तो करेंगे, फाइल नहीं, फाइल तो क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, मतलब टिक लगा दूंगी, वो 10 मिनट का काम है। उसके बाद क्या करना है जल्दी बताओ, मैं लिख रही हूँ, अपन वही पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस में बताऊंगी। बोलो बोलो, कौन बता रहा है? आमिर बता रहा है। आमिर क्या करना है? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कौन किस चीज के? देखो एक एक नंबर वाले तो हमारे हो गए थे ऑलमोस्ट। सबके, मतलब मैम वही प्रोग्रामिंग के। ओसवाल के क्वेश्चन सॉल्व करें? ओसवाल लिए क्या किसी ने? नहीं, नहीं ली ना? ऑनलाइन पढ़े हैं मैम। ऑनलाइन है क्या? पीडीएफ है ओसवाल की? यस मैम पढ़े हैं, दूसरा है अरिहंत का। अरिहंत का है क्या पीडीएफ? सेंड करना, कौन से क्वेश्चन है। यस मैम। है ना, तो सेंड कर देना, अपन उसमें से देख लेंगे, प्रोजेक्टर चला के कर लेंगे। ये तो ओसवाल के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है, ओके। और इन तुम लोगों की आईपी वालों, तुम लोगों के लिए भी मुझे एक वो मिल गई है, उसकी सुमिता अरोड़ा वाली बुक, फास्ट एंड मूव वाली, वो अच्छी रहेगी तुम लोगों के लिए, आईपी वालों के लिए, ठीक है। चलो उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। और तुम लोगों को क्या करना है, आईपी वालों को पांडास फिर से पढ़ना है क्या? स्टार्टिंग से बोलो जल्दी, एससीटीएच क्या बोलता है? यस मैम। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रोजेक्टर में मैं क्वेश्चंस दे दूंगी ओसवाल के या अरिहंत वाले, मुझे बताना फनिंद्र कौन से हैं, भेज देना, ग्रुप में भेज देना पीडीएफ, ठीक है, यस मैम। आज ही भेज देना। और तो अपन वो पीडीएफ तुम लोग सॉल्व करना, सीएस वाले और आईपी वाले पांडास पढ़ेंगे। चलो ठीक है, साई राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे को।